Okay, so in the last class we have discussed about keywords identifiers. Tokens we have discussed, right? Keywords and identifier we have discussed. Okay, so identifier means a valid variable name or function name, array name, etc. etc. Okay, so keywords and, and identifiers we have seen. So today we are going to see next what is next token. Constant is there, string operator. Okay, that is the same thing. Okay, whatever available in C, that is the same thing. Okay, save as this class as 6. Okay, let us talk about these constants. You know, integer constant, decimal point, matlab decimal integer. Okay, that is integer constant, floating point constant, character constant, hexadecimal constant, octal constant, and string constants. So the value which cannot be changed, we can say that is what constant. A constant refer to the fixed value. Okay. For example, we are writing here pi is equal to pi is equal to 3.14. That is what constant. Okay. Which is constant? Floating point constant. That do not change during the execution of the program. Okay, during the execution of the program. A constant refer to the fixed value that do not change during the execution of program. Okay, like C and C++. So like C++ supports several kind of literal constant. Okay, several kind of literal constant. Okay, like C and C++ support several kind of literal constants. Okay, they include क्या क्या रह सकते हैं, integer constant, floating point constant, character constant, string constant. Okay, that includes integer, then character, comma, floating point number, and string also. Okay, and when we use the literal constant, so they do not have the memory location. Okay, integer literal, okay, numbers literal, they don't have the memory locations. मेमोरी लोकेशन किसको रहती है, वेरिएबल्स को रहती है. Okay, literal constant do not have memory locations.
ओके, लिटरल्स को मेमोरी लोकेशन नहीं रहता है, जैसे ये है 12। ओके, सिंगल कैरेक्टर यम, है ना, इसको मेमोरी लोकेशन नहीं रहता, किसको रहता है, वेरिएबल को रहता है, जहाँ पे ये स्टोर है। ओके, इसको रहता है। नाउ, so what are the types? Okay, examples. Okay, constant and examples. Okay, constant and example. Okay, C++ is a object-oriented programming language. That means it follows a properties or principle of OOPS. Okay, in the principle of OOPS, we start here what classes, objects. Okay, but classes, object are the concept. Okay, that is not a principle. लेकिन हम फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो हमने प्रिंसिपल में लिखा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जब आप जावा पढ़ने जाओगे, ओके, हायर लेवल पे पढ़ने जाते हो आप, तो आपको कहा जाता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है, उप्स के, ठीक है, उप्स के प्रिंसिपल नहीं है ये, और ये उप्स उप्स बोलते हैं, तो एस इज स्टैंड फॉर नथिंग। ओके, इट्स ओनली द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, हमने देखा कि एस इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, सिस्टम, ओके, और सॉफ्टवेयर, नथिंग। ओके, देर इज नो, आई थिंक हमने पहले वीडियो में देखा कि ए स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर। सो कैसे कि नाउ डेज आर people are saying this is structure, some are saying this is system. Okay, that is their own definitions. So I have written there the one structures also like this way, but here in the oops there is a no meaning of yes. Okay, there is a no meaning of yes, the standard way. Okay, जैसे हम हायर लेवल पढ़ने जाते हैं, मतलब हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेल्स फॉर और एनीथिंग एल्स सॉफ्टवेयर्स, तो हम यहाँ पे एक कारपोरेट की तरह बात करते हैं। ओके, सो उस टाइम पे हम एज ए स्टूडेंट की तरह, टीचिंग की तरह ऐसे बात नहीं करते कि यस ई स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर। ओके, ऐसे बात नहीं करते। देर इज अ नो मीनिंग ऑफ एस। ओके, इट्स ओनली द ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ oops, so that's why we should have to know the classes and object like this way. But classes and objects are not the principle of oops. Okay, so what are the principle of oops? That is a polymorphism, encapsulation, okay, encapsulation, inheritance, okay, and abstraction. Polymorphism, encapsulations, inheritance, abstractions. Okay, that is the main features, main principles of oops. Classes and objects are concept there. Okay, so कोई आपको मतलब हायर लेवल पे पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको कोई बोलेंगे ए यू आर wrong, yes is not start for structure. Okay, so that is the true things, and sometimes the trainer going to be say hey, classes and objects are not a concept of are not a principle of oops, correct? Okay, what are the principles of oops? In inheritance, encapsulation, okay, polymorphism, those are the principles. So, but why we are going to say the classes and object is there? But because you are first time you are learning the oops concept. Okay, first clear this oops concept, so you will understand. Okay, जैसे जैसे प्रोग्राम लिखने चालू हो जाएंगे वैसे वैसे आप हायर लेवल पे बात करना चालू हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वेयर इट इज एग्जिस्ट. If you learn the Python, so everything is treated as an object. Object Python is a POP and as well as OOP, but हम प्रोसीजर ओरिएंटेड में जब हम लिखते हैं प्रोसीजरल में, ओके, तो भी हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो भी वो ए इज इक्वल टू समथिंग अगर हम ले रहे हैं, दैट इज आल्सो द ऑब्जेक्ट. ओके, वेरिएबल इज आल्सो द ऑब्जेक्ट इन द पाइथन, so that's why. So see here what are the constants. So we have the decimal integer constant. Okay, decimal integer, so that's how the base 10. Okay, decimal integer 10, 11, any numbers are there. Okay, etc, etc. Then floating point constant. Floating point constant means
points, any number, etc. Excuse me. Then octal constant, we have the same thing that is available in C. Okay, integer, octal integer. What is the base? Base is 8. Okay, right? This is a base 8, etc. Then hexadecimal constant, hexadecimal constant, hexadecimal integer. What is the base? Base is 16. How can represent 0x 1e? Okay, 0x 0 यूज करते हैं क्या? 0 x f. Okay, like this way, etc. Next one is what? Character constant. Okay, character constant, single character that is included in single code. Okay, encoded with single code. Okay, 1 is also character, 0 is also character because that is included in single code. Okay, then string constant that is included in double quote. Okay, C, C++, the double quote. If you writing that is a 0 1, that is also the constant. Sorry, string constant. Okay, single character you are returning the double quote, that is also the string. Okay, double quote में लिख रहे मतलब वो string है. That is also the string if you return in this double quote. Okay, that is treated as what? String. So these are the string constant. So we have the again that is what? Wide character constants. Okay, wide character constant. So an additional constant is available in C++. After the string the constant, wide character constant is there. So v char underscore t we are going to use there. That is also data type, means keywords also there. Okay. Okay, just I'm checking. Yes. Wide character constant. So that is denoted as capital L. Long string. Okay. Wide character. So w char underscore t. Let us open character. Keywords. Okay, this one. Wide char. Okay, some of the constant ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हो. सो यल से डिनोट कर रहे हैं.
Okay, so these are what? Constant. Now let us see what are the data types. Data types in the C++. Okay, data types in C++. What are the data types? You can see the diagram. Okay, same data type. Primitive, non-primitive. Okay, see the hierarchy data types classified in the C++. User defined data type and derived data type. Okay, built in मतलब primitive data type. Okay, derived मतलब non primitive. Derived plus user defined. So in the C++, data types are categorized in the user defined type, built in data type, and derived data type. Okay, so we know the built in data types. That is what? Integer, integral type, integer character, void type. Okay, inbuilt floating type, float double is there. Okay, also the string is supported in the ANSI C++. Okay, new version of C++ string is supported. Okay, in GCC compiler string data type is supported. Okay, कहाँ पे सपोर्ट करता है? डेव सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता, टर्बो सी प्लस प्लस में नहीं सपोर्ट करता स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ कंपाइलर. ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप इज एडेड. ठीक है, स्ट्रिंग द डेटा टाइप इज एडेड इन अनसी सी प्लस प्लस. ओके, अनसी मतलब होता है कि न्यू, ये ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, अनसी मतलब सी में कुछ नए फीचर्स डाले हैं, उसको नाम दिया अनसी. ओके, अनसी C++ or ANSI C. Okay, so ANSI C++ added here the string data type. ये कल सर हेलो, मैं ऐसे पढ़ रही थी कल, तो मैंने देखा कि ये ASCII कोड एक AMSI और एक मेटा यू ऐसा कुछ अलग अलग था. तो ये चार चीजें अलग अलग थी, पर ये क्या है एक्चुअली? जैसे ASCII कोड ASCII कोड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ASCII कोड एक इंस्टीट्यूट है जो ASCII कोड बनाता है. हाँ, ANSI कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कैरेक्टर का ANSI कोड रहता है. हाँ, UTI जो है वो एक कोडिंग है, मतलब कोडिंग इनकोडिंग टेक्निक है वो, एनकोडिंग टेक्निक. तो जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, @, हो गया. हाँ हाँ, तो जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो अलाउ नहीं करते. यूरो हो गया, या यूरो हो गए तो अपन तो HTML में लिख सकते हो, लेकिन रुपीस का सिंबल नहीं लिख सकते हम. हेलो. हेलो. हाँ हाँ, हाँ, बोलो. हैशटैग करके आपका आवाज आता है, उसके बाद चला जाता. हेलो. हैशटैग करके. देखो, ये एनकोडिंग टेक्निक है, जो भी आप एडिटर यूज करते हो. ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर आप यूज करते हैं, जैसे अगर आपको रुपीस का सिंबल यूज करना है, इंडियन रुपीस का, तो कीबोर्ड पे वो सिंबल नहीं है. ठीक है, हम क्या करते फिर नेट से डाउनलोड करते हो उसको, कॉपी उधर पेस्ट करते एडिटर में, तो एडिटर सपोर्ट नहीं करता है. सो दैट इज़ अ UTI जो आप ले रहे हो. एनकोडिंग टेक्निक कौन सी है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा एनकोड कर रहा है. तो इट्स अ एनकोडर इज देयर. ओके, हर एक में एनकोडर रहता है. वो कौन सा एनकोडर कौन सा यूज़ कर रहे, क्या कर रहे, उसके ऊपर डिपेंड है वो. एनकोडर इसको बोलते हैं UTI. देखो मैं यहाँ पे दिखाता आपको. न्यू और HTML.
ठीक है। सो UTF-8 है, UTF-9 है, ऐसे यहाँ पे इंकोडर रहते हैं। सो समटाइम्स इफ यू ट्राइंग टू कॉपी पेस्ट हियर एनी सिंबल फ्रॉम इंटरनेट, सो ये यहाँ पे सेव करने पे अलाउ नहीं करता कभी कभी। ओके। सो जैसे अगर मैं वो एनकोडर के ऊपर डिपेंड है, और मेटा कीवर्ड जो है वो सर्चिंग कीवर्ड्स है या फिर इंफॉर्मेशंस है। इंफॉर्मेशन, उस वेबसाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन, दैट इज अ मेटा कीवर्ड्स। मेटा क्लास है अवेलेबल इज देयर। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ हाँ, क्या बोले आप? मेरी हाँ, शेयर कर रहे आप? ओके, करो। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओके। दिख रहा है आपको अभी? हाँ। ये देखिए, ये पढ़ रही थी मैं। ओके। सो ये नंबर्स है, ये उसका आज आस्की की कोड है। ANSI, ये हाँ, 8859, ये क्या है मतलब इन चारों को क्या बोलते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशंस है, और उसके हिसाब से जो कैरेक्टर सेट है उनकी वो वैल्यूज़ है। मतलब ये इसका नंबर है, अंसी में भी वही लिखा जाता है जो आस्की में है। ओके। आपको कुछ ऐसा डिफरेंस दिख रहेगा कि जो कैरेक्टर अंसी? नहीं, कुछ भी नहीं है ना? कुछ कहीं भी कहीं भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना? ठीक है। लिखा गया है, सो कहीं अंसी, भी नहीं है। हाँ, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है, दैट इज द सेम थिंग। ओके। अंसी कोड और आस्की कोड, दैट इज द सेम थिंग। अंसी मतलब होता है कि जो लेटेस्ट में यूज़ करें, जैसे हम C++ में हम लिखते हैं कि लेटेस्ट हमको यूज़ करने, जैसे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड इन द टर्बो C++, बट वी कैन से इट्स अ ANSI स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे हम उसको? ANSI स्टैंडर्ड। तो जब हम ANSI स्टैंडर्ड कहते हैं तो यू कैन यूज इन द डेव C++ यूजिंग द नेम स्पेस स्टैंडर्ड। हम कैसे लिखते हैं उसको? यूजिंग द नेम स्पेस। ओके। ये देखिए, नीचे आ जाइए, वहाँ पे देखो लिखा है वहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज ASCII एंड ANSI इज अ स्टैंडर्ड। ओके। सो आइडेंटिकल वैल्यूज रहती है फॉर द ASCII वैल्यू के लिए। सो ये सब कैरेक्टर सेट है। विंडोज 1 0 to 225, विंडोज 1252, विंडोज 2 to 52, ये सब कैरेक्टर सेट है जो हम, सब कैरेक्टर सेट है। UTF है, हम UTF-8 ये हर जगह एडिटर में यूज़ करते हैं। यही कोड यूज़ करते हैं हम, यही रहता है हमारे पास हर एडिटर में। क्योंकि वो इसमें देखा वेट ऐसे लिखा बिल्कुल। ATF, आप HTML यूज़ करना चाहोगे वहाँ पे एडिट प्लस में जाओगे तो ATF है। सो इट एनकोडिंग तो टेक्निक। जैसे हम यूज करते हैं। नहीं नहीं, हर जगह, हर जगह। इट्स नॉट फॉर सी, इट इज़ नॉट फॉर सी, ऑल ऑल, इट्स कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सब कुछ, सभी। ओनली दिस इज नॉट ओनली, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कैरेक्टर सेट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर यूजिंग द सेम थिंग। ओके। ANSI इज अ स्टैंडर्ड कोड, दैट इज आल्सो यूजिंग द सेम थिंग। ANSI C++, additional features were added in the C and C++, that is known as ANSI C and ANSI C++। ओके। न्यू स्टैंडर्ड, जैसे बुलियन डेटा टाइप नहीं है सी में, ANSI C++ में है, ANSI C में है। तो इसके लिए आप कैसे यूज़ करेंगे ANSI? वी कैन यूज़ द अपडेटेड कंपाइलर, डेव C++ यूज़ करो, GCC। ओके। अपडेटेड न्यू कंपाइलर आपको यूज़ करना पड़ेगा एडिशनल फीचर्स यूज़ करने के लिए। जैसे अगर आप, ओके, सो देखो मैं अब स्क्रीन ये करता हूँ, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो टर्बो C++ में एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन वही अगर हम डेटा
जो सी प्लस प्लस में लिखेंगे वो चलेगा. सो दैट इज एनकोडिंग टेक्निक्स. लेट अस सी हियर टर्बो सी प्लस प्लस. ओके, अब मैं सी 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 प्लस प्लस का एक स्मॉल कोड लिखता हूँ. ओके, हैश इंक्लूड IO stream dot h. Okay, input output streams है. Then I am writing here void main. You can give, if you don't want to give the any return type, so you can give the void type. Okay, so here we are taking what, string. Okay, data type string name is equal to something. Okay, is it valid? Not valid. So now see out. Okay, I am going to print here the name. Okay, you can write here get cs or nothing you can write. Okay, save this one. p1.cpp. Okay, no, already is available there. Save this file with the p11.cpp. Okay, so now let us compile. Okay, 4 errors there. What is that? Undefined symbol string. Okay, are you getting there? Undefined symbol the string. So let us come here and let us take small s. Okay, again 4 errors are there, and function get ch should prototype. Let's see its prototype. Okay, you can write there return 0 otherwise. Okay, you can use here return 0. That is return 0 is ANSI standard. Okay, ये ANSI standard है. Okay, so main cannot return the value. Okay, so void matlab no return. Okay, so I am writing here int. Yes, that is okay. Now let us see statement is missing where. 4 string statement semicolon, where is the semicolon is missing. Undefined symbol and undefined symbol name. Okay, so string is not valid. Now the same code I am going to write in the C++, sorry, dev C++. Okay, ये देखिए क्या problem है. String is not available. Okay, string is not data type. Let us, I am going to comment this one. Okay, now what to do here? Can take here what, character array now. Okay, you can take the character array. Okay, character array लिया. Now let us check. Okay, run now, execute. There is a one error. That converted the char and something is there. Okay, so we need to take here what, character array. Okay, now let us see. Okay, output is there. Okay, output is available, but you can use here what, get ch, so can view the output. Okay, so include here conio.h for them. Okay, console input output. Undefined symbol name. अरे यार, sorry. Character name सेव नहीं किया था मैंने ना. 20 is equal to hash include conio.h. Okay, console input output dot. Okay, so we are getting the 2 times gun1. Okay, so you can write here what, clr scr. ठीक है. Okay, is it okay? So the string data type is not valid. Why you are written here the console input output? That is for our input and output. Okay, to show the output. So without get ch you are not getting this output. But in the C programming, just we are include here one stdr.h standard input output. So that is the beneficiary. Okay, so conio.h लिखने की जरूरत नहीं है.
C में, okay, stdio.h में, but in the stream you are including the stream input and output stream, so that for the get search you are writing there, okay, we are getting the instead output, so conio dot is we need to require there to write, okay. So इसको जाने दीजिए conio dot is our stream. So you can see here string data type value valid है क्या यहाँ पे नहीं है, so instead of string what we are taken here character array. Now let us open dev c++, okay. Now let us open the dev c++. सो दिस इज डिपेंड ये है, इसको हम बोलते हैं कि ANSI स्टैंडर्ड नहीं है, ओके ANSI स्टैंडर्ड यहाँ पे हम ये ड्यू सी प्लस प्लस जो है इसमें ANSI स्टैंडर्ड यूज होते हैं, ठीक है, मीन्स वी आर हैविंग द एडिशनल फीचर. सो नाउ आई एम राइटिंग हियर व्हाट हैश इंक्लूड IO stream dot h, okay, hash include IO stream dot h. So you can write here what integer int main, okay, you can provide here return type return 0, okay. Now so the string name is equal to Gunwant, okay, is it valid, okay. And now print that one C out name, okay. Now let us check, let us save this code, desktop C++, okay, and now execute. Okay, so what is the problem now? Compilation step, okay, see here IO stream.h no such a directory found, then how we can write here, okay, IO stream, then what is we are getting the error here, okay, string was not declared, okay, see here string was not declared, so we can't write here dot h, लिखने की जरूरत है क्या हमको नहीं, okay. So make the string yes capital, okay, yes capital. Now let us see what is going to take here string, okay, check here what is here string was not declared in the scope, okay, string was not declared in the scope, ठीक है. Now what we need to do here, look at here, now we are going to use our ANSI standard. What is that ANSI standard? ANSI standard, okay. So using namespace std, okay, now we are using here what name ANSI is called standard namespace standard, okay. So again we are getting the error. What is that error? String was not declared, okay. Let us check here small s now, okay. Now let us see the output we are getting or not. Yes, why? Because of this one using namespace standard, okay. This is ANSI code, ANSI code, okay. We are using here the ANSI code now, it's a ANSI code, right. ये है ANSI standard, ANSI C and ANSI C++, okay. Using namespace standard, using namespace standard we are going to use this one. What is ANSI C? ANSI standard follow करते हैं, it's also organization, okay. Using namespace standard we are going to use there. What is ANSI C standards? ये उनका लॉन्ग फॉर्म है, ओके. इट्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर सी, ANSI C, ANSI C++, that is for character set and standards, okay. So we are using your using namespace standard. यूजिंग नेम स्पेस जब हम लिखते हैं समझ जाओ कि ये ANSI का यूज कर रहे हैं हम, ANSI कोड, ANSI स्टैंडर्ड कोड वी कैन से, ओके. यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड,
ओके, ये देखो, using namespace standard. Also in C++ we are using only using namespace standard, but we can't write in the turbo C++. Okay, so यही अगर चीज़ हम turbo C++ में नहीं लिख सकते, because turbo C++ is the old compiler and we cannot use here ANSI standard. Okay, what is ANSI standard? ये ANSI standard है, ANSI or ANSI C++ standard is there. Okay, that is using namespace standard. So this is an organization that is for adding new concept there. Okay, and see here, never use using namespace standard for the beginners. Okay, for the beginners, so that's why we are not going to use for, इसलिए हम फर्स्ट यूनिट तो हम टर्बो सी प्लस प्लस से यूज़ करेंगे, you without using the namespace. After that you can use the namespace. Okay, in dev c++ you can use the namespace standard. Also C में भी हम लिख सकते हैं, एक नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, मतलब अंसी कोड का स्टैंडर्ड है वो. Okay, it's a just organization and it's providing the some standards for writing this program. Okay, standardization, standards things we are going to provide using namespace standard. Then using the namespace you can use the function. Okay, a lot of things are there. Okay, so STL is also there, STL libraries. So we have seen the generation of programming language, and there we have seen traditional C. After the traditional C, what is going to be what they have developed? ANSI C is developed. Okay, ANSI C is developed. After that, ANSI C++ is developed. Okay, so that means we are added some features to the C. Okay, in Turbo C++, the string is not available there, data type, but in ANSI C++, string is available. Okay, so where we are you going to use this string? In only the upper compiler, that is what dev C++ you can use. ओके, बट अगर देखो आपको दो टाइप्स के प्रोग्राम दिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और ये. ठीक है, नॉर्मल वाले जो टर्बो सी पे हम करेंगे, टर्बो C++ में हम लिखेंगे, सो डोंट यूज अ नेम स्पेस स्टैंडर्ड, नॉट यूजिंग नेम स्पेस. ओके, देयर string is not going to be access. Okay, not using the namespace, but in the dev C++, okay, ये upper compiler है, so you can use namespace standard. Okay, you can use namespace std. So ये difference है, so that is from ANSI code. Okay, that is organization deal with the new standard codes. Okay, organization है. Okay, what is IO stream, what is this, we are going to see, don't worry. When we are going to write structure of program, so I will explain this one. Okay, so there is a difference between C and C++. Default prototype is called the before declaration. Okay, prototype is mandatory. Prototype means फंक्शंस को प्रोटोटाइप देना. ओके, सो हमारा फंक्शंस चला है ना, फंक्शंस में प्रोटोटाइप्स हम यूज करते हैं. प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है कि फंक्शंस का मीनिंग, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है. ओके, एवरीथिंग, सो दैट इज व्हाट प्रोटोटाइप. ओके, इट्स जस्ट ऑर्गेनाइजेशन. सो द डेटा टाइप्स, built-in data types. Okay, integer, void and floating. So string data types is added. Okay, that is follow where in dev C++ means where in ANSI. Okay, in ANSI standard we are going to use, okay, that is added, this characters is added in the ANSI. Okay, in that character set this string is added. Okay, but in dev C++ in turbo C++ string keyword is not found because they are not added. Okay, but in dev C++ is added, means that is known as it's a ANSI standard. Okay, that is ANSI standard. So there is a one data type we can use in the C++, that is what string. Okay, that is ANSI standard, we are going to use the string data type also. Okay,
So these are the built-in data types, but we are not going to show here the string is the data built-in data types, but we can use, okay, we can use, but we cannot use the string data types in Turbo C++, but we can use in the Dev C++ because of ANSI standard. Okay, so user defined data types we already knew, structure, union, class, enumeration. Okay, enum का program हम already ले चुके हैं. Okay, C में that is the same thing. Derived data types, array, functions, pointers, reference. Okay, these are what derived data types. So these are the some hierarchy of data types. Okay, types of the data types. Okay, so we need to draw here a diagram. Okay. Hmm. Draw the diagram for data type. Now let us see what are the operators. Okay, operators in C++. Data types का explanation की ज़रूरत नहीं है. We already know that is the same thing which are available in C. Now what is the operators? Okay, what are the operators in C++? Okay, we know this operator additions, arithmetical operator. Okay, so वो अलग type के operators है. So the whatever the this additional operators we are going to see in C++, logical operator. Okay, वो सब available है, but we are going to take here other operators. Okay, that you know, you don't know that that operator we are going to take here. So the two most important operator is here, that is known as insertion operator and extractions operators. Okay, बाकी सब जो अरिथमेटिकल लॉजिकल जो है वो सब है, हाँ, वो सब ऑपरेटर्स है यहाँ पे. सो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सी में जो पढ़े हम जितने भी ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब सब. ओके, ऑल ऑपरेटर्स आर हियर, दैट इज फॉलोज, ऑल ऑपरेटर्स आर फॉलोज. Okay, so C++ has rich set of operator. So just in this token we are going to start it now. The tokens में से जो operator है just हम देख रहे हैं, तो C++ has a rich set of operators. All the C operators are valid in the C++ also. Okay, ठीक है अभी. Also all the C operators are valid in C++. जितने भी हमने ऑपरेटर देखे हैं C में वो सारे वैलिड है C++ में, लेकिन C++ में और एडिशनल है. ओके, व्हाट इज दैट सम एडिशनल ऑपरेटर्स? Two operators are most used in C++. Two operators. Okay, two operators. Okay, mostly used. Two operators used in C++ as follows. Okay, first is what? Insertion and extraction. Okay, insertion insertion operator and extraction operator. Okay, insertion operator and extraction operator. Insertion operator and extractor. Okay, insertion, what is the symbol? This. Okay,
double less than, and extraction is double greater than. Okay, insertion operator is this one, and extraction operator is this one. So in the C out and C out, okay, C out and C in, these are the input and output function in C++. You can say input and output stream function is there. Okay, these are the stream function because we include what, iostream.h. Okay, we include in which file, iostream.h. Okay, we include which file, iostream.h. So these are the streams available. What is that, C out and C in. So for the C out we can use here what, insertion, and C in we can write here what, extractions. Okay, insertion and extraction, these are the main two operators. Okay, other few operators are also available, and whatever the operators available in the C, that are the same. Okay, other new, okay, other new operators are, okay, this operator, that is known as what, scope resolution operator. Okay, ये देखिए दो बार कोलन लिखा है, ठीक है, दो बार कोलन लिखा है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, is known as scope resolution operator. Okay, we can use in our program, don't worry, every time we are going to use this one. Okay, then asterisk, scope resolution asterisk is there. Okay, so you can say the pointer to, so pointer, okay, pointer to member declaration. Okay, pointer to member declaration. Then so we know this one, pointer variable. Okay, it's a pointer variable, dash greater than, dash greater than, and you can write here what, asterisk. Okay, this one is what, pointer to, pointer to member operator. This one, dot asterisk, pointer to member operator, pointer to member operator, dot asterisk. Okay, also we have the delete operator. Okay, so it will release the memory. Okay, memory release operator you can say. Okay, memory release operator, delete operator, and L is also there. Okay, and L operator we are going to use for the new line. ओके, एंड एल यूज़ करते हैं हम, बैकस्लैश एन भी यूज़ कर सकते हो या फिर एंड एल भी यूज़ कर सकते हो न्यू लाइन के लिए. ओके, लाइन फीड ऑपरेटर, कैन से दिस इज अ लाइन फीड ऑपरेटर्स. कि जो ऑपरेटर आपको पता नहीं है वही हम ऑपरेटर ले रहे हैं, बाकी के सारे ऑपरेटर जो है बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रजिस्टर, सारे सेम है. ओके, वो सब यूज़ करना है सी प्लस प्लस में. उसके लिए हम सेपरेट क्लास नहीं लेने वाले हैं, डायरेक्ट हम प्रोग्राम लेंगे. एंड एल, देन न्यू ऑपरेटर इज देयर फॉर मेमोरी allocation. ओके, memory allocation operator, that is known as what, memory allocation operators. Okay, it's a memory allocation operator, you can say the dynamic memory, dynamic memory allocations. Okay, dynamic memory allocation. Okay, next one is what, set w, that is also one operator. आवाज नहीं आ रहा आपका. Hello,
आवाज़ नहीं आ रही, हेलो। आवाज़ तो मेरी तरफ से ऑन है सब। Everything is okay from my side. Filled with operator. Okay, so these are the operators. So audible नहीं हो मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. I don't have a problem from my side. Kindly check your device. Yes, am I audible? You can check your device, please. My mic is on. मेरा माइक ऑन है. Okay. So today what we've seen, constant. What are the types of constant here? Decimal integer constant, floating point constant, octal constant, hexadecimal character, string, and white character constant is there. One new thing is added. What are the data types in C++? Okay, we just seen here diagram for data types. Built-in data types. Okay, integral, floating, void. Also, we can use their what? String data type in dev C++ means in ANSYS standard code. Okay, and user defined data type structure union class enumerous. Derived data type array function pointer and reference. Operators in the C++. Whatever the operator used in the C, that is the same thing available in C++. Okay. Two operands used in the C++. What are these? The two operators. Sorry, two operators are used mostly used in the C++. That is what insertion operator and extraction. Insertion operator how can denote less than. Okay. Extraction operator how you can denote greater than. Okay. Other new operators are, what are the other new operators? Okay, these are all these other new operators. Scope resolution operator we are going to use. Okay, one of the program we are going to use this operator. This operator we are going to use pointer examples. Okay, delete operator for me deleting the memory. Okay, release the memory. Then endl operator we are also going to use in the programming to for the new line. Okay, new operator for the memory allocation operator. Dynamic memory will be allocated. Set w for the field with the operators. Okay, so these are the operators, and in the next class we are going to see the what is the structure of C++, and we are going to start our C++ programming. Okay, the next class we are going to start our C++ programming. What is the structure of C++, and we are going to start the C++ programming. So the tomorrow will be the holiday for the C++. Okay, C++ के लिए क्लास नहीं रहेगा, but C का क्लास रहेगा 2 बजे on the same time. No class for C++ on tomorrow. Okay, 2 p.m. Okay, tomorrow you have the C class at 2 p.m. Okay, yes, I am sharing these notes.